Samar Kumar, Vanshpal, keep your cameras on. Paras. Yes, Samar Kumar. Vanshpal. Vanshpal, why you were absent yesterday? Vanshpal? Yes, ma'am. Why you were absent yesterday? मैम मैं गया हुआ था कहीं पे. Okay, students, last page of this chapter, okay? Today, okay, tomorrow I will give you homework, okay? Today, then you will send it under assignments tab. All of you will send your homework under the assignments tab, okay? We will write there that do practice on 1, and you will not write first of all in the box, okay? You just have to attach the file. You will do your homework in your copies, okay, or in your observations book. Then you will take a photo, okay? After that you will upload that photo. You need not to write in that, you need not to type anything in that box, okay? आप कुछ type नहीं करोगे, just have to upload your copy, your photo, okay? आपने photo upload करनी है, लिखना नहीं है कुछ भी. Now, let me ask from Mehak 981. Mehak 981, what we have ready yesterday? कल क्या पढ़ा था महक? I was absent tomorrow. You were also absent. Anshita was Anshita was also Anshika 117. Yes, ma'am. Yes, Divanshi was present. Yes, Divanshi, but we had ready yesterday. Ma'am, we have read yesterday that when Faz reached school, he noticed something that there was no sound of opening and closing of desks, lesson repeatings, and his teacher were in a very beautiful coat. Okay, he was enrolled in a different dress. Okay. Okay. After that, ma'am, then he thought that today is very silent. How I will get in class, and ma'am, he was very frightened. But when Mr. M. Hamel saw him, he said very kindly, "Go to your seat." He jumped over the desk and sat down. Okay, Divyanshi, good. Okay, first of all, tell me, yesterday I have sent you PPT. Okay, in that same story, movie was there. Have you seen that? देखिए आपने कल मैंने एक PPT में send किया था. In that same, the last lesson story was there. कैसे एक student, Vanshika, have you seen that? Yes. वंशिका ने, और किसने देखी? क्योंकि मैंने भी सर्च करके वो आपको इंसर्ट की थी स्लाइड में. और किसने देखा उसको? अगर आपने नहीं देखा तो फिर कोई फायदा नहीं है ना कि मैंने सर्च किया, मैं कंप्यूटर में बैठी रही, मैंने सर्च किया और आपको सेम वो पूरा चैप्टर, वो लास्ट लेसन वो पीपीटी में सेंड किया था कल. और सेम स्टोरी थी कि फ्रांस ओपन करता है और वहां पे टीचर वॉज स्टैंडिंग और लास्ट में बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं. बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैंने भी कल देखा उसको. तो आपको जब सेंड करते हैं पीपीटी में कोई वीडियो वगैरह, तो प्लीज उसको देखा करो, ठीक है? अगर मैंने कल सेंड किए थे, मैंने सर्च किया, आपको सेंड किया और पूरी स्टोरी उसमें थी वैसी जैसे था. क्लास में एंटर होता है, बुलेटिन बोर्ड के पास ही क्रॉस, जब वो रोता है, बहुत दुखी होता है, देन टीचर कॉल्ड हिम टू रिसाइट द पार्टिसिपल, और जब वो आगे आता है तो ईच एंड एवरीथिंग वाज बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी. तो प्लीज आप भी देखना, अगर आपको सेंड करते हैं तो उसको देखा करो, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है ना. हम पीपीटी सेंड कर दें, आप खोलें ना, पेपर के टाइम खोलें, तो वो आपको सेंड किया था, उसको देखना. वंशिका, यस वंशिका 1192. वंशिका, आपने व्हाट डिड यू सी इन दैट? क्या देखा वंशिका ने? दैट वीडियो मैम जो आपने भी समझाया था मैम, उसकी तरह ही था. उसी की तरह था बिल्कुल. Okay, now you know this thing that his teacher M. Hamel is going. Okay, M. Hamel has said today there is
this is their last lesson. Now France is very shocked to hear this thing. Okay, France is regretted for not learning his chapter, for not learning French. Okay, now his teacher, अब उसका teacher, what did he say? वो क्या बोलता है उसका teacher बोलता है कि they pretend to be Frenchman. Okay, जब क्योंकि you know this thing that Alsace and Lorraine has passed into German hands, है ना? And German teacher would arrive the next day, and today is their last lesson. In order to pay respect, okay, उसको respect देने के लिए all the village men are there. Okay, they are sitting on the last bench because they want to give respect. This Kanika is again and again joining. They want to pay respect. अब last chapter page number 74 में we will read कि एम हैमल जो है, अब एम हैमल उनको क्या बोलता है कि सिर्फ वही दे आर नॉट टू फील सॉरी, उन्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है. आई वाज आल्सो एट मिस्टेक. मैं कैसे मिस्टेक में था कि जब मेरा दिल नहीं करता था देन आई यूज्ड टू सेंड यू फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, और जब मेरा दिल करता था फिशिंग करने के लिए देन आई डिक्लेयर्ड हॉलीडे. तो सभी की गलती है, हम सभी की गलती है कि वी वर नॉट सीरियस एट दैट टाइम. हमने फ्रेंच सीखी नहीं. अब हमारा देश जो है दैट हैज बिकम एनस्लेव्ड. ओके, अब वो स्लेव बन गया है, तो अब हमें फ्रेंच सीखने का मौका नहीं मिला. क्यों? क्योंकि कल से वी विल लर्न जर्मन. तो हम बनते हैं कि वी प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन. हम फ्रेंचमैन बनते हैं, बट हमें क्या, वी डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. हम सभी ने क्या किया, वी यूज टू पोस्टपोन द थिंग्स. आज नहीं कल पढ़ेंगे. इसने फ्रांस ने भी ऐसे सोचा कि आज मैं कल रीड करूंगा, कल पढ़ूंगा, जैसे हम करते हैं. और टाइम अब क्या हुआ, अब टाइम नहीं बचा. ओके, नाउ देयर इज नो टाइम इज लेफ्ट. पेज नंबर 74, फर्स्ट पैराग्राफ. शिवम ढडवाल. पेज नंबर 74, फर्स्ट पैराग्राफ, शिवम ढडवाल, 1961. Ma'am. Yes, Shivam. Yes, Shivam. मैम मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है. You are not at your home. Okay, Ayush Parmar, 2086. Yes, Okay, ma'am. Shivam. Yes. Yes, ma'am. Then from one thing another, Mr. Hammer went to on to the boat. Shivani Vanshpal Gupta. Keep your turn on your cameras. Vanshpal, Shivani, Riya Mehta, Payal. Sab. Ananya 2833. मैम मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है. Network problem. Okay, now send your attendance in the chat box also. I have to take screenshots. Okay, send your attendance, otherwise you will be marked as absent. Okay, attendance send karo. Yes, Ayush Parmar. Yes. Then from one thing to another, Mr. Hammer went on to walk off the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guide it. Among us never forgot. Among. It is among, beta. Among nahi bola, among. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have to keep to their prison. Then he opened grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. Patience. Much patience. Yes, ma'am. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all anew before going away, and to put it all into our heads on the stroke.
Okay, Ayush Parmar. Okay. After that, Payal 2062 will read. Payal 2062. Now, this M. Hamel praises their mother tongue. Okay, वो praise करता अपनी mother tongue की. Now, M. Hamel praises their mother tongue. He tells the class to guard their language because it is the only way. It is the only way to free oneself from the prison of slavery. Okay. अब एम हैमल क्या करते हैं? He praises his mother tongue. अपनी मदर टंग की प्रेज करते हैं कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत इजी है, वेरी इजी एंड क्लियर, मोस्ट लॉजिकल. तो हमें क्या, वी मस्ट गार्ड इट बिकॉज इट इज द ओनली वे टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द चेन्स ऑफ स्लेवरी. यही एक चीज है जिससे आप अपने स्लेवरी मीन्स गुलामी की जंजीरों को यू कैन ब्रेक. अब एम हैमल ने क्या किया? देन ही ओपन अ ग्रामर बुक. Okay, then the teacher took a lesson in grammar and that day France was surprised. France बहुत surprised होता है कि जो teacher बोल रहा है he is understanding everything. क्योंकि रोज फ्रांस क्या बोलता था? वो बोलता था कि I will study next day, I will study next day. But उस दिन अब फ्रांस को क्या लगता है कि जो भी टीचर बोल रहा है that he is understanding the lessons with ease. बहुत आसानी से उसको lessons समझ में आ रहे हैं. अब उसको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा attentive होता, had he been attentive from the very beginning, तो आज वो उसको फ्रेंच लैंग्वेज उसको रीड करना, उसको राइट करना आ जाती है. had he been attentive from the very beginning. अब फ्रांस को लगता है कि टीचर जो है, टीचर wanted to give the knowledge. जो नॉलेज टीचर के पास है, ऐसा लगता है कि टीचर ओके बिफोर गोइंग अवे. ओके, टीचर ऐसा फ्रांस को फील होता है कि जो टीचर है, एक तो फर्स्ट उसे फील होता है एक्चुअली हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टडीज चेंज्ड. ओके, जैसे उसको पता चलता है कि एम हैमल जा रहा है तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है. अब नाउ फ्रांस को लगता है कि जो टीचर है वो हमारे इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रहा है कि ऐसा लगता है कि जो टीचर के पास नॉलेज है, ही वांटेड टू गिव बिफोर लिविंग. जाने से पहले वो अपनी जो नॉलेज है, ऐसा लगता है कि सारी नॉलेज हमें दे देना चाहते हैं. कौन दे देना चाहते हैं? अक्षय चौधरी 2133. who wanted to give knowledge, who wanted to give all the knowledge to the students. Akshay Chaudhary 2133. Akshay Chaudhary. Yes, ma'am. Who wanted to give all the knowledge before leaving? कौन देना चाहते हैं? Yes, Arun Chaudhary, your answer is correct. Ma'am, Little France के teacher, ma'am. Yes. What is the name of Little France teacher? क्या नाम है उनका? What is his name? Akshit. What is the name of Little France teacher? Ma'am, M. Hamel. M. Hamel. Okay. Yes, M. Hamel had been serving in that school from how many years? For how many years? Sorry. M. Hamel was teacher in that school from how many years? कितने सालों से वो वहाँ पर टीचर था? Akshay Chaudhary. I'm asking from Akshay Chaudhary. 2133. Yes, Akshay Chaudhary. From how many he had been there as a teacher? कितने सालों से वो टीचर था वहां पर? I'm Hamel. You are going through your book. बुक से देख रहे हो? 3-4 दिन हो गए लेसन we have started. 40. Yes, Ananya. 40. 40. From the 40 years he had been serving as a teacher. He had been teacher in that school. Okay, 40 years. Akshay Chaudhary, beta, be attentive in the class. Now, Payal 2062. Payal 2062. Send your attendance in the chat box. Yes, Payal. Start reading. After grammar, we had a lesson like that day. M. Hamel had new copy for us, right in a beautiful round and France As I say,
they looked like little flags. Mhm. Floating everywhere in the school. Yes, what happened? Yes, Mehak 981. Mehak 981. Yes, ma'am. After Yes, the you grammar, started. after the grammar, we had a lesson in writing. The M. Hammer had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alice, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons stood very low, and I thought to myself, Okay, good. After that, Shivani 1087 will read. Okay, now the grammar lesson was over. Okay, after the grammar lesson, a phrase M. Hamel had brought new copies for them, and that were written in French language was written there. अब उसको क्या लगता है M. Hamel अब France has become serious. Okay, अब France को लगता है कि these are flags. Okay, ये flags हैं जो पूरे स्कूल में घूम रहे हैं. Okay, floating. They पूरे स्कूल में floating. They are floating. Now they started writing. Okay, आज वो इतने seriously they were working. बेटा कल जो मैंने PPT send की है, please go through it. Okay, बहुत अच्छी है. मैंने खुद देखा उस PPT को. बहुत अच्छी पूरी feelings बताई हैं. जैसे हम read कर रहे हैं इतनी feelings नहीं आ रही है. But तुम when you will see that video, तब तुम्हें लगेगा कि कैसे बच्चे जो थे, how those kids, those students were crying, वो इतना रो रहे थे. एक बहुत cute सी लड़की बताई हुई है और बहुत ज्यादा वो रो रहे थे. प्लीज उसको प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, नाउ अब वो बोलते हैं कि वी वर सो बिजी, हम इतने बिजी थे हम अपने काम करने में कि वहां पर तो बीटल्स उड़ रही थी. नोबडी पेड अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपने काम करने में बिजी थे. एंड देयर वाज सो मच सोलम. तुम जानते हो शिवम ढटवाल, व्हाट इज दिस? Okay, they all were busy in doing their work that nobody noticed that those beetles that were flying. अब उसके बाद क्या होता है, अब वहां पे कोई आवाज नहीं थी. ओके, हर एक चीज वाज वेरी सोलम, वेरी सीरियस. ओके, देन सिर्फ क्या आवाज थी जब वो लिख रहे थे, व्हेन दे वर राइटिंग, तो पेन की जो आवाज होती है जब पेपर के ऊपर लिखते हैं, थोड़ी सी आवाज स्क्रैचिंग की आती है, ओनली दैट साउंड वाज देयर. नाउ अब क्या करता है, रूफ में पिजन्स वर देयर. ओके, अब वो they were cooking. Okay, उनकी साउंड आ रही थी. अब फ्रांस सोचते हैं मन में कि क्या वो जर्मन्स जब यहाँ पर आएंगे, क्या वो जर्मन्स पिजन्स को भी बोलेंगे कि तुम्हें जर्मन लैंग्वेज में ही साउंड करनी है. ओके, तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो पिजन्स है, दे आर सिटिंग ओवर देयर, कि जर्मन्स विल मेक देम टू साउंड इन जर्मन, कि जर्मन में इनको अपनी साउंड निकालनी पड़ेगी. ओके, आफ्टर दैट हु वाज सपोज्ड टू रीड? Ananya 2833. Okay, whenever I look, page number 74, third paragraph. Page number 74, third paragraph. Ananya 2833. yes, ma'am. Yes, ma'am. Shiva. Okay. Yes, Will Ananya. will they make them sign in German every day, even the pigeon? Ananya, SING, sign, who are you singing? Will they make them sing in German? Even the pigeons, क्या वो pigeons को sing करने को बोलेंगे जर्मन में? Okay, whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and at another, as if he
wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only desk and bench has been burnt smooth. The walnut trees in the Walnut. garden. Ananya, what is walnut? 2833. What is walnut? क्या होता है walnut? Big Anybody? Yes. Fig. Fig is different. Fig is different. Walnut is different. Both are different. Yes. What is walnut? क्या होता है walnut? Anyone? What is walnut? अखरोट. अखरोट. Okay. हाँ, अखरोट को we call it walnut. Okay, walnut. Yes. Continue. walnut trees in the garden were taller, and the pine that he had planted himself twined about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Okay, okay, Ananya. After that, Ananya Dogra will read 1769. Now, this France, as you know, the story is narrated by France. Then the France kya karta, when he was busy in his writing, okay, and he looked at M. Hamel. Then what did he notice? He noticed that M. Hamel bilkul motionless. He was sitting motionless. Okay, आप खुद सोचो थोड़ा सा कि आज आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पर एकदम से वॉर या ब्रिटिशर्स फिर से आ गए और हमें बोला कि कल तुम्हें यू हैव टू लीव दिस कंट्री, तो तुम्हें हाउ यू विल फील, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें हर एक चीज यू हैव टू लीव, तुम्हें अपना घर, अपना जो भी तुमने प्लांट किए हैं, गार्डन्स, किचन गार्डन, तुम्हें लीव करके जाने हैं और मॉर्निंग में तुम्हें निकलना है, तो हाउ यू विल फील। मीन्स ये स्टोरी बहुत इमोशंस वाली है। अब ये एम हैमल की तरफ जब वो छोटा लड़का स्कूल गोइंग बॉय जब एम हैमल की तरफ देखता है तो एम हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस विद नो मूवमेंट वाज देयर। तो व्हाट एम हैमल वाज डूइंग, ही वाज लुकिंग एट वन डेस्क, फिर दूसरे डेस्क को देख रहा था। मींस वो हर एक चीज को बहुत ध्यान से, ही वाज गेजिंग एट ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज को देख रहा था, एक चीज को फिर दूसरी चीज को। तो एम फ्रांस को लगता है जैसे वो हर एक चीज को अपने माइंड में फिक्स करना चाहता था। गार्डन वॉज देयर एंड दैट गार्डन हैड बीन प्लांटेड बाय एम हैमल। एम हैमल ने वो गार्डन लगाया था। अब उसको बहुत लगता है कि ये एम हैमल यहाँ पे 40 years he had been serving here और इसको ऑर्डर मिल गया कि टुमारो दे हैव टू लीव द कंट्री, कल सुबह तक इनको कंट्री छोड़ के जाना है। तो एम हैमल जो था वो he had become very solemn, doleful you can say, मातमी जिसको तुम बोल सकते हो, doleful he had become। और उसको आवाज जो उसकी सिस्टर थी, she was packing their robes, अपने कपड़े वो वगैरह वो सामान को पैक कर रही थी, तो वो आवाज उसको सुनाई दे रही थी। तो एम हैमल क्या था, बहुत चुपचाप बैठ गया था और अब के डेस्क वो सब कुछ उसने ट्रीज, वॉलनट ट्रीज प्लांट किए थे, डेस्क वगैरह सब ठीक थे, ओनली दे वर worn out, मींस जब डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, जैसे यूज कर करके चीज थोड़ी खराब हो जाती है, इट वाज लाइक दैट। अब एम हैमल उसकी सिस्टर क्या थी, ट्रंक्स को पैक कर रही थी, जो भी सामान था वो पैकिंग कर रही थी, एंड बिकॉज दे हैव टू लीव द कंट्री, नेक्स्ट डे दे हैव टू लीव द कंट्री। ओके अनन्या डोगरा, यस ma'am. All at once the church clock struck 12, then the angelus at the same moment. No, Ananya, wait a minute. From the above paragraph, but he had the courage to hear. But he had the courage to hear every lesson to the every last. After the writing, he had a lesson in history, and then the
babies Chanted. chanted, Hmm. there are be, boo, boo. Hmm. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with motions and trembled with the motions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. Okay, okay, continue. Hmm. All at once, Continue. the church clock struck 12, then the endless at the same moment, the trumpets of the Persians turning from drill sounded. There are windows. Amhallam stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend said but something caught him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Wife, France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hands. School is dismissed. You may go. Okay, that was a very, I must say, very emotional chapter. It was. Now, last में क्या होता है? Now he had become. Let me take screenshots, okay? Otherwise, okay. Anybody can summarize it? Anybody can summarize it? क्या था इसमें? Okay. Yes, Yamini was saying. Yes, ma'am. Okay, summarize it. Ma'am, the whole chapter. No, this last paragraph. Yes, ma'am. Ma'am, the teacher, Mr. Ham, is very emotional, and he is sitting on his chair is very quiet, and then he suddenly turned to the blackboard and take a piece of chalk and write on the blackboard that Viva la France, ma'am. That means that long live France. And Okay. he stopped his hand, and without a word, because he was very emotional, so he can't say even a word. So his last words was, "School is dismissed. You may." Okay. Any other student who wants to summarize? Any other student? Okay. Now, okay. Let me answer. Why Anuja is absent from your class? Anuja absent क्यों रहती है आपकी क्लास में? Daily she is absent. Yes, ma'am. हर क्लास में absent है क्योंकि daily में attendance send करती तो Anuja is always absent. Okay. Then what happened? Okay, they say he had become emotionless, but he had the patience. अभी भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि इतना courage था. He had the courage कि जो हम बोल रहे थे, he could hear it. Okay, हम जो भी बोल रहे थे, he had the courage to hear that. After the writing, उसके बाद क्या होता है? हमें एक चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर निकालते, ओके, एंड द बेबीज लग पड़ते हैं वो सारे अपनी लैंग्वेज में बोलने. आफ्टर दैट बैक ऑफ द रूम, एज यू नो, ऑल द पीपल, ऑल द ओल्ड मैन एंड सम दिस हॉजर एंड वन
2-3 people were there in the class and they were holding their primers. Primers means textbooks. Okay, वो भी textbook के साथ they were standing at the back of the class और वो भी उन्होंने books खोली थी and they were also reciting. Okay, लेकिन उनकी क्या था, मतलब वो ऐसे recite साथ साथ में रो भी रहे थे because it is their last lesson. तो वो साथ साथ में they were crying और ऐसा लग रहा था समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ emotionless था. Okay, अब क्या होता है कि अब वो जब फ्रांस उसको देखता है एम हैमिल को, तो फ्रांस को लगता है कि एम हैमिल कितने टॉल है. मींस इससे पहले उसने इतना नोटिस नहीं किया था, तब उसको लगता है कि एम हैमिल बहुत टॉल है. और जैसे 12 o'clock, when the watch clock struck 12 o'clock, तो अब क्या होता है, तो वो प्रेशियस जो थे अपनी एक्सरसाइज से वापस आ जाते हैं. ओके, और एम हैमिल जो थे ही स्टूड अप. ओके, ही स्टूड अप वेरी पेल, मींस वो इतना पेल येलो और बहुत इमोशनलेस था. वो वेरी इमोशनल, वो खड़ा हो जाता है एम हैमिल क्योंकि टाइम हो गया था. और एम हैमिल जो था ही वाज नॉट एबल टू अटर एनी वर्ड. ओके, उसको कुछ नहीं था, वो एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहा था. वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है अपनी चेयर से. नाउ फ्रांसिस सेइंग कि आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मैंने उसको इतना लंबा नहीं देखा पहले. अब वो बोलने लगता है, he tried to speak, एम हैमिल कुछ बोलने लग पड़ता, आई करता है, बट समथिंग चोक्ड मी. चोक मींस गला घुटना, उसको हम चोक बोलते हैं, अनेबल टू या ब्रीथ. ओके, जब आप सांस नहीं ले पाते, गला थोड़ा घुटने लगता है, दैट इज कॉल्ड चोक. तो समथिंग चोक्ड, ऐसा लगा कि उसका गला जो है वो रुक गया, बोलते बोलते रुक जाता है और आगे वो बोल नहीं पाता. फिर क्या करता है वो, he turned towards the blackboard में टर्न करते, he took a piece of chalk and as means large as he could write, तो वहां पे लिखता है vive la France, means long live France. ओके, अब वो पूरे उसके साथ लिखता है, जहां तक लिख सकता था long live France, और चुप हो जाता है, अपने हेड को वॉल के साथ लगा लेता है. अब वो बोल नहीं सकता था, उस टाइम उसकी वैसी कंडीशन थी. और वो एक जेस्चर मीन्स जब आप बॉडी से ऐसे कोई कर देते हो, ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे, दैट इज कॉल्ड जेस्चर. अब वो मुंह से नहीं बोलता है, बट एक जेस्चर बनाता है ऐसे करके अपनी आर्म से, स्कूल इज डिसमिस एंड यू मे गो. ठीक है, स्कूल खत्म हो गया और अब आप जा सकते हो. तो दैट वाज योर स्टोरी, द लास्ट लेसन. आई टोल्ड यू दिस, योर चैप्टर नंबर 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ऑलरेडी आई टोल्ड दिस थिंग. नाउ एनीवन, ओके, कम टू प्रैक्टिस जोन 1. Okay, come to practice zone 1. We will discuss it. Okay, chapter. Any problem in the chapter? Have you understood? Have you understood? It means you have not understood. सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Shall we move to practice zone 1? Yes, ma'am. Okay. मुझे लग रहा है सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स को समझ में आया. पायल गिविंग नो रिस्पॉन्स, अनन्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं, विभा शर्मा, ओके, आयुष्मान, 3-4 बच्चे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस जोन 1, क्वेश्चन पेज नंबर 75. यस, कनिका 2934. मुझे लग रहा है कि कनिका हैज टेकन हर ब्रेकफास्ट, कुछ उसने हैवी ले लिया और नाउ शी इज लाइंग ऑन द बेड. कनिका बेड में लेटी है, और आंख नहीं खुल रही है इस लड़की की, इतना ज्यादा खाना खा लिया है. कनिका खूब से रोटी खाई होगी और दही बल्ले वगैरह खाए कि कनिका की मुझे लग रहा है कि अब हिम्मत नहीं है बोलने की. कनिका बेटे, बेड में यू आर लाइंग ऑन योर बेड, और मुझे लग रहा है कि खाने की वो होती है ना, नशा चढ़े या बस तुम ज्यादा. कनिका फर्स्ट क्वेश्चन, अब बैठिए. Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन, Why was France hesitated to go to school that day? why was France hesitant to go to school that day? Yes, Kanika, why he was hesitant? He did not want to go to school. Why? Very easy. This question is never start your answer with. Never start your answer with because. France was hesitating to go to the school because there was a test that Miss M. Hamill gave him, but he does not know one letter of that test.
गिव्ड मैंने तो अभी कोई वर्ड सुना नहीं है, गिफ्ट नहीं होता बेटा, गेव. Okay, give, gave, given. Okay, Ananya Dogra has also raised his hand. Yes, Ananya Dogra. Ma'am, France First was question. hesitant to go to school that day because M. Hamel had said that he would question the class regarding participle, and France had no clue what it was. And France had no clue what it was. Okay, good, Ananya. Yes, after that, Vanshika 1192, second question. Yes, France was hesitant to go to school that day because his teacher M. Hamel has said that he would question them on participles. Okay, and he kya tha wo? And he did not know the first word at all. Okay, now Vanshika Yes, ma'am. 1192. अब बच्चों ने क्लास दिया. Abhimanyu 1748, Abhinav Chaudhary, please keep your cameras on. Aditya Mehra, keep your cameras on. Arun, Bhavna Sharma, Kanishk. Yes, Vanshika, second question. Yes, ma'am. What temptations did France overcome to proceed to school? Okay, okay. Yes, Vanshika. Yes, ma'am. Ma'am, because no, ma'am. France overcome to proceed to school because in the school there was very hustle and bustle. Hustle and bustle, which could be heard out in the street. What temptations did France overcome to proceed to school? अब उसने he had to go to school, लेकिन वो school नहीं जाना चाहता. What did he wanted to do? He wanted to, क्या करना चाहता था वो? Instead of going to school, क्या चाहता था वो करने? हाँ, yes, Vanshika. Ma'am, he thought that I was run away. He was run away and spending that day out of doors, and the birds were chirping at the edges of the trees, and it was open field. More tempting. It was more tempting. Yes, ma'am. And he also thought that he bunked the school. Okay, Ananya has again raised his hand. Let us ask from Ananya. Yes, Ananya Dogra. France had spent his whole time outdoor the classroom. Okay. Instead of spending the day in the class, where did he tempted to spend his day? He tempted to spend his day outdoor, okay, near the Sar river. Okay. Question number